Hello friends, welcome to the new video of GK for Show Success. And friends, please subscribe, share, like and hit the bell icon for all future updates. And in this video, we'll be discussing some important questions related to biology. Okay, so let's begin the video. The first question is, which chromosome is responsible for manliness in man? So your options are A. XO, B. YO, C. XX or D. XY. So the answer is D, that is XY. So जो XY क्रोमोसोम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने में. Okay. Talking about sex hormones, sex hormones are referred as X and Y, and their combination determines a person's sex. And talking about female sex hormones, they have two XX chromosomes, while man possesses an X and Y pairing. Now moving on to the next question. The plant which grows well only in light are known as, वो कौन से पौधे हैं जो रोशनी में अच्छे से उगते हैं? So your options are Asiophytes, B. Epiphytes, C. Heliophytes or D. Xerophytes. So the answer is option C, that is Heliophytes. And if we see, or if we rather bifurcate the word heliophyte, then you will get the word helio, which means sun or light. तो आप इससे गैस कर सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो सकता है if you don't know the answer. Okay, talking about heliophytes. Heliophytes plants are those that can grow or are tolerant to full sunlight. और इसी से रिजेंबल करता है एक क्लास है जिसे कहते हैं हेलोफाइट्स. और हेलोफाइट्स प्लांट्स actually grow in saline condition. Okay, now talking about Asiophilus or Asiophytes. So they are the plants that are adapted to low light. अगर कहें तो ये they actually love shadow. मतलब ये shadow में ज़्यादा अच्छे से उगते हैं. Okay, now talking about xerophytes. Xerophytes are plants that grow in limited water or very less water condition. और इसका एग्जाम्पल है आपका कैक्टस. और जनरली इन प्लांट्स में जो टैप रूट होती है वो काफ़ी लंबी होती है एंड दे ग्रो डीप इनसाइड द सॉइल और दे पेनिट्रेट द सॉइल in search of water. Okay, and talking about epiphytes. Epiphytes are plants that grows on another plants. मतलब वो creepers, जो ये क्लास है वो creepers में आता है, वो दूसरे पौधों पे चढ़ के उगता है, मतलब उनका मैकेनिकल सपोर्ट लेता है. Okay, so moving on to the next question. The sigmoid colon is a part of. Sigmoid colon किसका हिस्सा है? Your options are anal canal, B. large intestine, C. small intestine or D. ileum. So the answer is large intestine, that is option B. And as you can see in the diagram, the sigmoid colon is shown by purple color. और ये large intestine का ही हिस्सा होता है. एक्चुअली लार्ज इंटेस्टीन वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है. एक होता है कोलन, दूसरा होता है रेक्टम और थर्ड एनस. सो सिग्मॉइड कोलन एक्चुअली इसमें जाके जो वेस्ट होता है बॉडी का वो स्टोर होता है.
in a form of feces or poop. और अगर बात करें functions of intestine, so the main function of large intestine is to turn the food waste into stool, which actually passes from the body through or as a poop through anus. Okay, now moving on to the next question. The phrase survival of the fittest as a way of describing the mechanism of natural selection was coined by. तो ये जो फ्रेज है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसे किसने डिस्क्राइब किया था? ये ऑप्शंस आर चार्ल्स बैबेज, लुइस पास्चर, मैरी क्यूरी और हर्बर्ट स्पेंसर. So the answer is option D, that is हर्बर्ट स्पेंसर. और अगर बात करें कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी, तो वो थे चार्ल्स डार्विन. Okay, now moving on to the next question. Hind limbs thumping on the ground by a rabbit is a behavior related to. Options are courtship, B, warning to the members, C, preparation for a duet, or D, surrender to a stronger opponent. तो जो खरगोश होता है वो पैर ज़मीन पे पटकता है अपने अगले पैर, और तो ये मतलब किस चीज़ से रिलेटेड, ये बिहेवियर किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ गिविंग वार्निंग सिग्नल टू द मेंबर्स. और आप अगर इसको देखें तो ये स्टैग भी करते हैं और रेंडियर्स भी करते हैं, जो अपना पैर पटकते हैं जब अपने ओपोनेंट को गुस्सा दिखाते हैं या उन्हें वार्निंग देना होता है. तो और बच्चों को भी आपने देखा होगा कभी कभी गुस्से में अपना पैर पटकना. Okay, now moving on to the next question. Leech is an ectoparasite on cattle, which is, your options are sanguivorous, B, carnivorous, C, omnivorous, or D, herbivorous. तो लीच एक्टोपैरासाइट होते हैं, वो क्या होते हैं? अच्छा, टॉकिंग अबाउट ectoparasite, ectoparasites are actually which lives on outside of the host. जैसे हमारे स्किन पे बैक्टीरिया होता है या जो भी होता है, वो हम होस्ट हैं, और हमारी बॉडी पे ऊपर स्किन पे जो रहता है या जीता है, उस पर पलता है, उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं. और जो बॉडी के अंदर पलते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं. सो दोनों में यही डिफरेंस है कि एक्टो इज द वन हु लिव्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द होस्ट, लाइक लीच और मॉस्किटो कह लीजिए, एग्जाम्पल में माइट, फ्ली और लाइस. और एंड टॉकिंग अबाउट एंडोपैरासाइट, दे लिव्स आउट inside the host, like your tapeworm or roundworm or any protozoa. Okay, retrieving back to the question. So the answer is your option A, that is sanguivorous. And sanguivorous are the ectoparasites which feed on blood. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, the best example would be your mosquito. Okay, moving on to the next question. अच्छा, इसमें कार्निवोरस वो होते हैं, आपको पता है, the one who feeds on flesh or meat. ओमनिवोरस जो बोथ हर्ब और मीट पे डिपेंडेंट होते हैं, और हर्बीवोरस ऑन हर्ब्स या वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड फूड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Out of diphtheria, whooping cough, typhoid, diarrhea and malaria, which is not caused by bacteria? तो डिप्थीरिया में वूपिंग कफ यानी आपकी काली खांसी, टाइफॉइड आपको पता है एंट्रिक फीवर को कहते हैं, और डायरिया भी आपको पता है, मलेरिया भी आपको पता है.
तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता है? So the answer is option C, that is malaria. So malaria is not caused by bacteria, और बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं. तो मलेरिया किससे होता है फिर? मलेरिया इज caused by parasite, and that parasite is known as plasmodium parasite. And sorry for the disturbance, actually some plane is passing. Okay, now moving on to the next question. Which among the following controls the protein synthesis and heredity? So your options are amino acids, gene, DNA or RNA. So the answer is gene. So gene not only controls the protein synthesis, that is production of it, but also hereditary. And talking about gene are basic unit of hereditary that actually uh, occupies a specific location on the chromosome, and it controls the the look of the or your characteristics, and they are passed from parents to children. Now moving on to the next question. Cobalt is a component of which of the following vitamin? Cobalt इनमें से किस विटामिन का हिस्सा है? और your options are vitamin A, vitamin D, vitamin E or vitamin B12. So your answer is option D, that is vitamin B12. And talking about cobalt, so cobalt 60 is used in the treatment of cancer, and also in sterilization of mechanical equipments. Okay, and talking about B12, B12 is very essential for blood circulation. It helps in healthy blood circulation. And vitamin E, it is essential for fertility in human body, and also good for healthy skin. Talking about D, uh, the deficiency of vitamin D causes rickets, and it is essential for healthy bones. And talking about vitamin A, it is essential for good eyesight and skin, and it also helps build immunity against infection. And विटामिन ए जो है आपका लीवर में स्टोर होता है. Okay, now moving on to the next question, and I think this one is the last question of this session. Okay, which of the following branches of biology is concerned with the effects of radiation on living organisms? तो बायो की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कंसर्न है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? So the answer is option A, that is actinobiology. Okay, that's all for this session. Please like, comment, share and subscribe the channel. And in the next video, we'll be discussing some important questions related to word geography. And thanks for watching. Until we meet next, please take care of yourself. Thank you.